Hello students, good morning and welcome to your beautiful channel 33.physics for you. आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। लेकिन उससे पहले लेट अस डिस्कस सम ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इट। सबसे पहले टू साइंटिस्ट नेम ल्यूमर थे और एक था प्रिंसिम। राइट, ये दो साइंटिस्ट प्लॉटेड द ग्राफ, एक्चुअली दे मेजर द रिलेटिव इंटेंसिटी एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, दैट इज कैविटी रेडिएशन। जो कैविटी रेडिएशंस एमिट हो रहे थे फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी और कैविटी, यू कैन से, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है और यू हैव कम अक्रॉस इट इन 11th स्टैंडर्ड, राइट। सो कैविटी रेडिएशन की उन्होंने रिलेटिव इंटेंसिटी मेजर की एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, एंड दे प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। जो ग्राफ था वेवलेंथ वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी का, इट वाज समथिंग लाइक दिस। जो ग्राफ था वो पर्टिकुलर इस तरह का कुछ था। Right, this was the graph of relative intensity versus wavelength for different temperature. ये temperature T1 ले लो, T2 and T3, where T3 actually, where T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3. Right, this was the graph plotted by them, relative intensity versus wavelength. Now different scientists try to explain this graph. अलग-अलग scientists ने on the basis of their experience, their experiment, they try to explain this graph, but most of them fail to explain this. सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, दे वर रेले एंड जीन्स, रेलेस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, राइट, यू माइट हैव कम अक्रॉस। सो वो रेले थे और दूसरा था जीन्स। तो उन्होंने ट्राई किया टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, बट दे फेल टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। लेटर ऑन वेन, यू माइट हैव कम अक्रॉस वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इन स्टैंडर्ड 11, राइट। तो वही साइंटिस्ट वेन ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, लेकिन वो भी फेल हुए टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, राइट। सो द एक्सप्लेनेशन वॉज इनकम्प्लीट फॉर दिस ग्राफ। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक, राइट। ही गेव एन हाइपोथेसिस। उसने ऐसा एज्यूम किया कि सपोज जो कैविटी की वॉल है, दैट वॉल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। द वॉल ऑफ द कैविटी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, एंड दिस डाइपोल डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर ऑसिलेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जिस डाइपोल का टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट विल बी ऑसिलेटिंग विथ हायर फ्रीक्वेंसी, and the dipole having low temperature will be oscillating with lower frequency, right? So the dipole will oscillate with different frequency depending on their temperature and will emit radiations of the frequency with which they are oscillating. कुछ जिस frequency से oscillate हो रहे हैं, वही frequency की radiations they will emit. जो प्लैंक का स्टेटमेंट था या hypothesis था, it was like this: the wall of the cavity is made up of electric dipoles, and these dipoles depending on their temperature will oscillate with different frequency and will emit radiations of the frequency with which they are oscillating, right? So this was Planck's hypothesis. So यहाँ पे जो आपको याद रखना है, it will emit radiation of energy equal to E is equal to HF or NHF if there are n number of dipoles, right? E is equal to NHF. You can say HF is energy of photons. Quanta of energies, actually it was given name as quanta of energy, bundle of energy और packet of energy. HF जो था उसे नाम दिया गया था इनिशियली क्वांटा ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट। सो E इज इक्वल टू NHF, वहाँ पे F जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, H जो है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. E is equal to NHF, where N is an integer. So you can say that
total energy of the emitted radiation will be an integral multiple of HF. Now ये जो concept था that was totally against classical physics. This concept was totally against classical physics. कैसे against था? Look, यहाँ पे अगर आप मान लो कि HF की वैल्यू 5 है, for simplicity let us say HF equal to 5. तो when you put N equal to 1, एनर्जी हो जाएगी 5, राइट. 1 into 5 will be 5. मान लो n is equal to 2, so 2 into 5 will be 10. So the first energy is 5 and the next possible energy is 10, right? First possible energy is 5 and the next possible energy is 10. The next possible will be 15 and so on. This simply means that अगर एनर्जी 5 और 10 के बीच में कोई वैल्यू है एनर्जी की, अगर एनर्जी की वैल्यू 5 और 10 के बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, then this dipole will not oscillate. उसने क्या कहा कि wall of the cavity is made up of dipole and they will oscillate with different frequency depending on their temperature and will emit the radiation of the frequency with which they are oscillating. खुद जिस frequency से oscillate हो रहे हैं वही frequency की radiation emit करेंगे, right? So उनकी energy होगी NHF. It means that the energy of oscillation is suppose 5, HF is 5. So n equal to 1 डालोगे तो energy will be 5. If you put n is equal to 2, energy will be 10. It means that अगर वो dipole 5 has energy 5 joule, अगर वो dipole के पास energy 5 joule की है, then it will oscillate. But if that dipole is having energy let us say 7, 7.99, 6.5, 8.5, 9.2, ऐसे कोई value है, then that dipole will not oscillate. Right? This was totally against classical physics. क्यों? क्योंकि सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, राइट? यहां से हम एक पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं. नाउ इफ यू कीप दिस एनर्जी ऑफ दिस पेंडुलम एज 5 जूल, देन इट विल ओसिलेट, राइट? इफ यू कीप एनर्जी एज 7 जूल, इट विल नॉट ओसिलेट. मींस डाइपोल को हमने यहाँ पे, सॉरी, पेंडुलम को हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया है सच दैट एट दिस पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज लेट अस से 7 जूल, और आप रिलीज करोगे देन इट विल नॉट ओसिलेट. ये यहीं पे रहेगा लाइक दिस, राइट? सो दिस वाज अगेंस्ट क्लासिकल फिजिक्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. डाइपोल या पेंडुलम कोई भी चीज है जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर आप उसे थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, राइट? अगर आप उसे थोड़ा भी डिस्प्लेस कर रहे हो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देन इट विल ऑसिलेट. क्लियर? तो यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स. सो ऑल साइंटिस्ट वर अगेंस्ट दिस, राइट? लेटर ऑन बहुत अलग अलग स्टोरी है दैट वी विल नॉट डिस्कस नाउ. Right, this was the basic concept. Now Einstein explanation पे आते हैं. What is Einstein explanation for photoelectric effect? Einstein explanation for photoelectric effect. Einstein has taken this concept one step ahead. Einstein ने ऐसा assume किया कि जो emission है photo electrons का, right, that is also taking place in the form of photons. Means not only absorption of light takes place in the form of photons, but its emission will also take place in the form of photons, right? मान लो हमारे पास एक metal surface है. Let us say this is that metal surface. यहाँ पे हमारे पास कोई एक मेटल है, राइट? एंड ऑन दिस मेटल वी आर इंसिडेंटिंग लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एब्जॉर्ब दिस लाइट एंड दे विल बी एमिटेड. नाउ सपोज द एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन इज, लेट अस से न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख लेते हैं, लेट अस से इट इज 5 EV, और जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का दैट इज सपोज 2 EV, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा दिस विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ एनर्जी 5 minus 2 that is equal to 3 EV, right? So electron will be emitted from the metal surface with the energy of 3 EV. So ये जो है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमें पता है, दिस इज HF, राइट? वर्क फंक्शन को हम बोलते हैं 5. सो यहाँ पे जो 5 है दैट इज HF and this 2 is 5. So you can say that the kinetic energy of emitted electron, the kinetic energy of emitted electron will be equal to HF minus 5, right? This you can write as maximum kinetic energy of emitted photoelectrons.
अगर ये एनर्जी 2 है, सपोज इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 2, मान लो ये एनर्जी हमारे पास 2 है, then electron will be emitted with 2 minus 2, 0 eV energy. Electron will be emitted with 0 energy. Means जो emission हो रहा है photons का, that is taking place in the form of photons and absorption also takes place in the form of photons. So Einstein का पहला statement था, not only emission of electrons takes place in the form of photons, but absorption will also take place in the form of photons, right? So if the energy of incident radiation is HF and the work function of metal plate is phi, then E will be equal to HF minus phi, and with this energy electrons will be emitted. Remember, he added one more thing. Electron will either absorb the complete energy or it will not absorb at all. ये जो energy है, ये electron या तो ये energy totally absorb करेगा or it will not absorb at all. So if it is absorbing total energy, then kinetic energy will be equal to HF minus phi. Right? हमने already discuss किया कि kinetic energy is equal to EV0 and that is equal to HF minus phi. So this implies that V0 will be equal to H by E into F minus phi by E. Right? So V0 will be equal to H by E into F minus phi by E. This will be the equation for stopping potential. Now, based on this equation, if we plot a graph of stopping potential versus frequency, then that graph must be a straight line graph. You can see y equal to mx plus c. This is y equal to mx plus c, something like this. So, if we plot a graph of stopping potential versus frequency, then the graph will be a straight line graph like this, right, where this point will represent threshold frequency. So based on this equation, अगर हम ये equation use करके graph plot करेंगे, then our graph will be a straight line graph, and this graph is in exactly equal to the experimental graph of photoelectric effect. ये जो graph था, this graph was exactly similar to the graph which we have plotted while discussing photoelectric effect, right? So this is an excellent agreement with the graph of photoelectric effect. So ये जो first point था about photoelectric effect, Einstein was able to explain this clearly. Now the second point was that के intensity जो है incident radiation की, right? With increase in the intensity, number of photoelectrons will increase, but energy will not change. Right? We have already discussed. अगर आपको कोई confusion है, so go to the previous video. In that you will find this, that intensity of incident radiation अगर आप change कर रहे हो, frequency same रख रहे हो, then energy of emitted electron will not change and stopping potential will not change. Only number of photoelectrons will change. Right? On changing the intensity of incident light and keeping frequency constant, it was found that kinetic energy and stopping potential remain same, while number of photoelectrons and photoelectric current increases. So for that, Einstein gave explanation that intensity I, second point है, intensity I is energy over area into time. Now according to Planck's hypothesis, energy is NHF over area into time. Now area of the surface is constant, area already constant है, right? HF frequency हम constant रख रहे हैं, तो F is constant, H is also constant. Let us say T is per unit time, so T is also constant. So here यहाँ पे H, F, A, T सब constant है. So you can see that intensity is directly proportional to N. Right? So if you keep on increasing intensity of incident radiation, N means number of photoelectrons will keep on increasing, और number of photoelectron increase हो रहे हैं, that's why we can say that photoelectric current is also increasing. Clear? Now third point था, the process is instantaneous or spontaneous. हमें पता है photoelectric effect की जो third point था, in that we have discussed that within 10 raised to minus 9 second of incident light photoelectrons are emitted. 10 raised to minus 9 second में ही photoelectrons emit हो रहे हैं, right? So for that Einstein suggested that, यहाँ पे हमने already discuss कर लिया है, when radiation fall on the surface, electron will either completely absorb this radiation or it will not absorb at all. तुरंत ही इलेक्ट्रॉन टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और इट विल नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल. एंड इफ इट इज टोटली एब्जॉर्बिंग, देन द प्रोसेस मस्ट बी इंस्टेंटेनियस एंड स्पॉन्टेनियस, राइट? सो दिस वाज द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. नंबर 1,
एक तो ये ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव से लेके स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस फाइव बाई ई, ये ग्राफ के बारे में हमें पूरा पॉइंट डिस्कस करना है। सेकेंड, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और थर्ड जो पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें डिस्कस करनी है। एमसीक्यू इज यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y मीन्स v नॉट हो गया, x मीन्स f हो गया, सो m इज स्लोप, यहाँ पे m जो है वो स्लोप है, राइट। सो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ the slope of graph of stopping potential versus frequency is h by e, that is h is Planck constant over e is charge of electron, right, h by e. So what you have to do, अगर ये रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया है देन यू शुड नो द वैल्यू ऑफ h। h हमने ऑलरेडी दिखा है यहाँ पे 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सो द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ v नॉट वर्सेस f इज h बाई e, और यही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ऐसा पूछ सकते हैं, द स्लोप ऑफ graph of EV naught versus T, so EV naught versus F, the slope of graph of EV naught versus F। तो अगर आप E को कंसीडर करो, यहां पे ले जाओ, राइट, सो EV naught versus F will be H, so the slope of graph of EV naught versus F will be H, that is Planck constant, right। The slope of graph of E V naught versus F is Planck constant H, and the slope of graph of V naught versus F is H by E. This is most important for MCQ, right? Value numerical value में दिया है, then you have to simplify this. Value of H आपको पता ही है, value of electron, charge of electron आपको पता ही है, right? So this is how you can solve. So this is a simple topic related to Einstein explanation for photoelectric effect. Remember, this is the most important topic from this chapter. बोर्ड में 2-3 बार रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा गया है, राइट एक्सप्लेनेशन और गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ गिव आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 और 3 मार्क्स। आपको ये तीनों पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट examples based on this formula from this chapter. Clear? Thank you.